हेलो सर, आवाज आ रही है? यस सर। सर, इट्स टेलिंग ओनली द होस्ट कैन शेयर। सर, परमिशन ग्रांट कर दीजिए कि एनीवन कैन शेयर। यस सर। यस सर, हो गया। यस। ये स्टार्ट करूं या? ओके सर। ओके सर। ओके सर। सो गुड इवनिंग एवरीवन, शुभ संध्या। मु होची अम्लान अंशुमत साहू, एम्स भुवनेश्वर एमबीबीएस छात्र। मोर नीट 2022 रे ऑल इंडिया रैंक थिला 424। आज आम पढ़ा जाऊे एनसीईआरटी केमिस्ट्री क्लास 11th रो प्रथम चैप्टर, जोड़ा सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। फर्स्ट आम इंपोर्टेंट पॉइंट्स एंड समरी रिवाइज करवा, तापरे प्रीवियस क्वेश्चंस और एनसीईआरटी रो किछि एग्जांपल्स प्रैक्टिस करवा। सो लेट्स स्टार्ट। सो सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। सो क्लास बेले एनसीईआरटी बही को निजे साइड रे रखो, तो इजी टू अंडरस्टैंड हो। सो फर्स्ट, नेचर ऑफ मैटर। एटा क्विक रिवीजन करबा, एटा समस्त को जाना अछि। मैटर definition: anything which has mass and occupies space or volume is known as matter. Matter can exist in three physical states, that is solid, liquid and gas. एटा समस्त को जाना अछि। सॉलिड रो प्रॉपर्टी नॉन कंप्रेसिबिलिटी हबो, और सॉलिड्स रे बहुत क्लोजली पैक्ड थांती एटम्स। लिक्विड रे आउट के डिस्टेंस थाए, काइनेटिक एनर्जी टिके अधिका थाए, इंटरमोलिकुलर स्पेस भी अधिका थाए। एंड गैस रे इंटरमोलिकुलर स्पेस सबुठ अधिका थाए और इंटरमोलिकुलर फोर्स सबुठारु कम थाए। मैटर को आउ गोटे प्रकार क्लासिफिकेशन भी कराई परिबो, एडा ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स होची सॉलिड, लिक्विड, गैस। ऑन द बेसिस ऑफ मिक्सचर सेडो हम करि परिबा। प्यूरिटी बा impure substance, pure substance और impure substance। impure substance रो meaning mixtures। mixtures again two types: homogeneous mixture and heterogeneous mixture। pure substance two types: elements and compounds। elements मिसी ही compounds बनाए। so एटा रिवीजन होला। नेक्स्ट होची मेजरमेंट ऑफ मैटर। एटा एनसीईआरटी रे गोटे टेबल देची, जोठारे बेस फिजिकल क्वांटिटीज देची बा बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज ऑफ मैटर। मैटर को मेजरमेंट करिया पे 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज अछि। सेही 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को यूज करी हमें सेकेंडरी बा कंपाउंड क्वांटिटीज फॉर्म करू, जोटारा मैटर रो बा फिजिक्स और केमिस्ट्री रे जते भी थियोरेटिकल जिनस यूज होची से सब मेजर हे परियो। सो फर्स्ट, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी। सो मोस्टली केमिस्ट्री रे हमर यूज हबो मास, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। मास रो एसआई यूनिट होची किलोग्राम, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर रो एसआई यूनिट होची केल्विन और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस रो एसआई यूनिट होची मोल। नाउ temperature. 0 Kelvin is known as absolute temperature, where all the molecular movement ceases.
तो 0 केल्विन रे कोन होय 0 केल्विन होची सबुटारो लोएस्ट टेंपरेचर लोअर देन 0 केल्विन टेंपरेचर एग्जिस्ट करि परिबानी आउ 0 केल्विन रे सब मॉलिक्यूलर मूवमेंट सीज कर जीवो इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस इनफिनिट हे जीवो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल बाय 0 हे जीवो टेम्परेचर को मेनली तीन टा यूनिट रे मेजर करा जाए डिग्री सेल्सियस डिग्री फ़ारेनहाइट आउ केल्विन बट एसआई यूनिट होची केल्विन तो सबु कैलकुलेशन केल्विन रे हबो तो फ़ारेनहाइट रे को तो क्वेश्चन रे एमएदी भे पारे कि से टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट रे देछि बा सेल्सियस रे देछि बट कैलकुलेशन हमु करिया पे हेउ केल्विन रे कन्वर्ट करिया पड़े सपोज टेम्परेचर देछि फ़ारेनहाइट रे देछि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट तो सेडा सेल्सियस रे कन्वर्ट करिया पे ए फार्मूला यूज करा हबो तो 32 इक्वल टू 9 by 5 into degree Celsius plus 32 so एथिरु डिग्री सेल्सियस असला हमरो 0 डिग्री सेल्सियस एबे केल्विन 0 डिग्री सेल्सियस को केल्विन रे कन्वर्ट केमि कराबो केल्विन इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15 that is Kelvin equal to 0 degree Celsius plus 273.15 that is 273.15 Kelvin एडा होची फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर नेक्स्ट आसियो सिग्निफिकेंट फिगर्स जो भी कैलकुलेशन करा जाए फिजिकल क्वांटिटीज रो बा मेजरमेंट्स रो सेथरे बहुत इंपोर्टेंट गोटे कांसेप्ट होची सिग्निफिकेंट फिगर्स रो बहुत इंपोर्टेंस अछि कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस रे जोठरे फिजिक्स रे एंड फिजिकल केमिस्ट्री तो सिग्निफिकेंट फिगर्स आइडेंटिफाई करिया पे किछि रूल्स जोडा एनसीईआरटी रो डायरेक्ट उठे के आनची से लिखा है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट all non-zero digits are significant so से example देछि जदि 285 cm निया वाला तो सेतरे तीनटा significant figure अछि it is 2 8 और 5 और जदि 0.25 ml निया वाला सेतरे 2 significant figures अछि काइना all non-zero digits are significant second rule होछि zeros preceding to the first non-zero digit are not significant first non-zero digit पूर्वरु जत्ते भी zero आसीबो से सब non significant फॉर एग्जांपल एड देछि 0.03 रे ओनली वन सिग्निफिकेंट फिगर अछि दैट इज A3 और 0.052 रे ओनली टू सिग्निफिकेंट फिगर अछि दैट इज 5 और 2 सो सपोज हमें नेबा 0.007302 एतरे केतरा सिग्निफिकेंट फिगर हबो A0 फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट रू आगरु आछचनी से दिजन इनसिग्निफिकेंट एडा सिग्निफिकेंट A0 सिग्निफिकेंट डिजिट परे आछची तो एडा सिग्निफिकेंट हबो एडा भी सिग्निफिकेंट हबो तो एतरे फोर सिग्निफिकेंट डिजिट्स zeros between two non-zero digits are significant जोड़ा मु एटा कहली एटा non-zero digit A0 ए दिजन डिजिट मझिरे अछि सो एटा significant हबो fourth rule zeros at the end or right of a number are significant provided they are on the right side of the decimal point for example जदि हमें 100 लिखिबा तो सेटा ए दिटा जीरो इनसिग्निफिकेंट हबो ओनली ए वन डा सिग्निफिकेंट हबो मात्र जदि हमें लिखिबा 100.0 तो कौन लिखी zeros at the end or right of a number significant they are on the right side of the decimal point तो लिखी से 100 रे गोटे सिग्निफिकेंट फिगर 100.0 रे फोर सिग्निफिकेंट फिगर्स कहीं की बिकॉज़ 100 रे ए दिटा जीरो डेसिमल पॉइंट पूर्वर अछन तो ए दिटा इनसिग्निफिकेंट है ओनली एडा सिग्निफिकेंट है बट जतरा हमें लिखिबा 100.0 तो ए जीरो रा डेसिमल परे अछि और ए जीरो दिटा सिग्निफिकेंट फिगर मझिर अछि तो एटा भी सिग्निफिकेंट हम so एथरे हबो फोर सिग्निफिकेंट फिगर्स फॉर एग्जांपल 0.200 ग्राम हैज थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स 0.200 ग्राम एथरे तीनटा सिग्निफिकेंट फिगर केमि देला एटा होची 0 एटा कोन लिखि छी all non-zero digits are significant तो एटा significant होला zeros preceding to the first non-zero digit are not significant so एटा first non-zero digit रो पूर्व जेतला भी जीरो रहबो सेटा insignificant हबो तो एटा insignificant एटा सिग्निफिकेंट काइना से कहै छी डेसिमल पॉइंट रो राइट रे बा एंड ऑफ द नंबर रे जो जीरो अछि सेटा सिग्निफिकेंट हबो सेथरे थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स so terminal zeros are not significant if there is no decimal point जेमिति 100 रहला terminal zero significant हलानी जदी decimal point नहीं such numbers are better represented in the scientific notation
We can express 100 as 1 into 10 to the power 2 for one significant figure, 1.0 into 10 to the power 2 for two significant figure, and 1.00 into 10 to the power 2 for three significant figures. So जदि आम 100 को डिफरेंट वेज रे लिखिया चाहिए जमी गोटे सिग्निफिकेंट दीटा सिग्निफिकेंट या तीन सिग्निफिकेंट फिगर आसो तो आम से 100 लिखा फॉर वन सिग्निफिकेंट फिगर बा 1 इंटू 10 टू द पावर 2 जदि आम से लिखा 1.0 इंटू 10 टू द पावर 2 से आसो टू सिग्निफिकेंट फिगर बिकॉज डेसिमल पर राइट रे जीरो भी सिग्निफिकेंट हो बट आम जो लिखा 1.00 इंटू 10 टू द पावर 2 से आसो थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स. Now, counting the numbers of objects, for example, two balls or two eggs have infinite number of significant figures as there are exact numbers and can be represented by writing infinite number of zeros after placing a decimal. For example, जदि हमें कहबा two eggs, सेटा हमें 2.0 x कहि परिबा 00 x कहि परिबा 000 एमडी infinite number of zero पके परिबा. So counting number of object बा किछि जदि हमें definite counting करछे सेटा infinite number of significant figures अछि because हमें infinite number of zero सेतरे ऐड कर परिबा. Next is addition and subtraction of the significant figures. The result cannot have more digits to the right of the decimal point than either of the original numbers. Result cannot have more digits to the right of the decimal point than either of the original number. ଯେତେବେଳେ ଆମେ କିଛି quantities को add करिवा କିଛି numbers को add करिवा जो result आसीबो ସେଥିରେ ସବୁଠାରୁ कम decimal point वाला जो addend थिबो सेटा ही तार final number of digits after the decimal point रहेगा. For example, जब 8 से ऐड करछि 12.11 18.0 1.012 आंसर आछि 31.122 बट एटा को हम जेतो रिजल्ट रे लिखिबा हम एटा लिखिबा 31.1 काहे कि ना 12.11 रे केतरा डेसिमल डिजिट्स अछि दीडा 18.0 रे अछि गोटे 1.012 रे अछि तीनटा से कहिछि कि the result cannot have more digits to the right than the either of the original number. को भी ओरिजिनल नंबर रा जत्तेटा डेसिमल पॉइंट अछि डेसिमल डिजिट अछि ताठारु अधिका रिजल्ट रहि परियो. सो 18.0 रे गोटे डेसिमल डिजिट अछि तो रिजल्ट रे गोटे रु अधिका डेसिमल डिजिट हम रखि परिबन. सो रिजल्ट हबो 31.1. एबे से कोन कोछि multiplication and division of the significant figures. In this operation the result must be reported with no more significant figures as in the measurement with few significant figures. So addition subtraction और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन भितर गोटे छोट डिफरेंस अछि. एडिशन सब्ट्रैक्शन जे से कहिछि कि जो ओरिजिनल नंबर हमें ऐड करछे बा सब्ट्रैक्ट करछे फाइनल रिजल्ट रे केतरा डेसिमल डिजिट्स रहबो सब बेले इक्वल टू द सेही ओरिजिनल नंबर जोठारे सबुठारु कम डेसिमल डिजिट अछि. बट मल्टीप्लिकेशन डिवीजन रे सेम बट डेसिमल डिजिट प्लेस रे सिग्निफिकेंट फिगर्स माने जदि आमे किछि नंबर्स को मल्टीप्लाई करिवा किछि को डिवाइड करिवा तो फाइनल जो रिजल्ट आसीबो सेतरा आमे सेतटा सिग्निफिकेंट फिगर रखि परिवा जोटा ओरिजिनल नंबर रे सबुठारु कम सिग्निफिकेंट फिगर अछि. फॉर एग्जांपल एठी लिखा अछि 2.5 into 1.25 एटा आसला 3.125 बट हम एटा रिजल्ट केते लिखिया रिजल्ट लिखिया 3.1 काहे ना एथिरे दीटा सिग्निफिकेंट फिगर अछि एथिरे तीनटा सिग्निफिकेंट फिगर अछि और से कहछि कि no more significant figures with the fewest significant figure original number वाला. तो ओरिजिनल नंबर रे fewest significant figure केतरा दीटा अछि तो आंसर भी मैक्सिमम में दीटा ही significant figure रखिबा that is 3.1. So since 2.5 has two significant figures the result should not have more than two significant figures. The result जेतु सबरु least दीटा significant figure रखिबा काइना ओरिजिनल नंबर रे least significant figure होछि 2. हम गोटे क्वेश्चन करिवा suppose 4.1 5.342 4.10 रखवा 12.12 ये तीनटा ऐड करवा 2 6 5 4 5 9 to 11 21.562 तो हम रिजल्ट केते लिखियो 21.56 काई
लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल डिजिट्स केते एथरे डीटा डेसिमल डिजिट्स एथरे तीनटा डेसिमल डिजिट्स एथरे डीटा डेसिमल डिजिट तो लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल डिजिट होची 2 तो हम एथरे डीटा ही डेसिमल डिजिट रखि परियो सिमिलरली जदि हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन रे गोटे कैलकुलेशन करियो 1.03 into 21.2 21.200 एमडी करियो तो 2 3 जा 6 2 0 जा 0 2 1 जा 2 103 206 6 3 8 1 2 ସେଥିରେ କେତେଟା ଡେସିମାଲ ଆସିବ ଏଥିରେ ଦିଟା ଏଥିରେ ଗୋଟେ तो 21.836 असला आंसर तो से क्षेत्र कहिछि कि नो मोर सिग्निफिकेंट फिगर्स देन वन ऑफ द ओरिजिनल विथ द फ्यूअर सिग्निफिकेंट फिगर्स तो एथिरे केतरा सिग्निफिकेंट फिगर अछि तीनटा सिग्निफिकेंट फिगर एथिरे केतरा अछि 1 2 3 4 5 पांचटा सिग्निफिकेंट फिगर अछि ए जीरो जाको सिग्निफिकेंट हबो कारण से डेसिमल डिजिट रो राइट रो अछि तो एथिरे हमें तीनटा ही सिग्निफिकेंट फिगर रखि परियो तो एटा रखिया और एटा रखिया ए दिजराउ काट देना 21.8 आ गोटे छोट कांसेप्ट थिला राउंडिंग ऑफ सपोज क्वेश्चन आसुची सपोज हमर रिजल्ट आसला 31.526 और सेटा को हमको 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स को राउंड अप करियार अछि तो एटार केतरा 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स अछि 4 को राउंड अप करिया माने हमको लास्ट डिजिट को एलिमिनेट करिया पड़ियो लास्ट डिजिट एबे एथरे अछि 6 तो गोटे रूल होची जदी जदी लास्ट डिजिट ग्रेटर देन 5 अछि तो तार प्रीवियस डिजिट रे +1 ऐड होगा जदी लास्ट डिजिट लेस देन 5 अछि सेटा जेमिति अछि एज इट इज रहइबो ता पूर्व डिजिट जदी इक्वल टू 5 अछि तो इवन केस रे एज इट इज रहइबो बट ऑड केस रे +1 ऐड होगा फॉर एग्जांपल 8 अछि एडा नबा एटा को 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स से राउंड अप करियर अछि तो ए 6 को हम एलिमिनेट करिया पड़ियो लास्ट डिजिट 5 तो अधिक अछि माने ता प्रीवियस डिजिट रे हमें +1 ऐड करिया दैट इज 31.53 करिया जदि एटा थांदा 31.522 थांदा तो लास्ट डिजिट रे 2 अछि तो लेस देन 5 तो किछि भी ऐड होबन ता प्रीवियस डिजिट रे डायरेक्ट लिखवा 31.52 जदि इक्वल टू 5 रहइबो 1.25 तो सेटा कोन लिखा छै जदि ता प्रीवियस डिजिट इवन अछि तो सेथरे किछि ऐड होबनी बट ऑड थिले गोवन ऐड हो तो एठिरे 5 अछि एटा को रिमूव करिया जदि ए पूर्व डिजिट इवन अछि तो सेथरे किछि ऐड होबनी 1.2 लिखा हो और जदि से डिजिट ऑड अछि सपोज 1.375 तो ये 5 को रिमूव करिया तो पूर्व डिजिट 7 ऑड अछि तो एथरे 1 ऐड होबो दैट इज 1.38 लिखा हो बुझा पड़ला एबे जीवा नेक्स्ट कांसेप्ट laws of gases important Gay-Lussac's law Avogadro's law Boyle's law और Charles law Gay-Lussac's law कौन को है when gases combine or are produced in a chemical reaction they do so in a simple ratio by volume provided that all gases are at the same temperature and pressure तो ସେଇଠି କହିଛି କି temperature constant pressure constant इसे କହିଛି when gases combine they do so in a simple ratio by volume से କହିଛି कि ଯେତେବେଳେ gases react କରିବେ ସେ କେମିତିଆ ରେସିଓରେ କରିବେ ଭଲ୍ୟୁମ ରେସିଓରେ ରିଆକ୍ଟ କରିବେ ଯେତେବେଳେ ଟେମ୍ପରେଚର ଆଉ ପ୍ରେସର କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ moles of gases reaction will be directly proportional to volume ଏଟା ହଉଛି Gay-Lussac's law କହୁଛି ଯେତେବେଳେ temperature constant pressure constant moles of gases reacting will be directly proportional to their volume Avogadro's law कौन कହୁଛି equal volumes of all gases at the same temperature and pressure should contain equal number of molecules এটা হଉଛି ଗୋଟେ important ଜିନିଷ equal volume of all gases at the same temperature and pressure should contain
equal number of molecules एथिरु से देइचंदी एवोगाड्रोस नंबर सेटा कोन गोटे सेम टेम्परेचर प्रेशर फॉर एग्जांपल 0 डिग्री सेल्सियस और 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर रे आमे नेले 0 डिग्री सेल्सियस और 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर रे आमे नेले 2 लीटर ऑक्सीजन और 2 लीटर हाइड्रोजन 2 लीटर हाइड्रोजन सल्फाइड नहीं गया तो से कहि कि इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो एटा 2 लीटर ऑक्सीजन हला 2 लीटर H2O हला इक्वल वॉल्यूम्स हला इक्वल टेम्परेचर हला इक्वल प्रेशर हला तो सेतिर नंबर इक्वल भी मॉलिक्यूल हो गेल-लुसाक्स लॉ भी ऑलमोस्ट सेटा ही कहै चांदी कि टेम्परेचर कांस्टेंट अछि प्रेशर कांस्टेंट अछि तो मोल इज प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम सेटा को एवोगाड्रो कहै कि जदी वॉल्यूम भी कांस्टेंट हे जिवो तो मोल सब बळे सेम रहबो तो 2 लीटर ऑक्सीजन रे जत्ते मॉलिक्यूल अछंदी 2 लीटर H2S रे सेते मॉलिक्यूल हेबे जतो टेम्परेचर और प्रेशर सेम रहबो सेटा केते रहबो 0 डिग्री सेल्सियस और 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर रे 1 मोल ऑफ गैस केते वॉल्यूम ऑक्युपाई करिवो 22.4 लीटर्स ऑक्युपाई करिवो एटा इंपोर्टेंट छै 0 डिग्री सेल्सियस और 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर रे 1 मोल ऑफ गैस सबले 22.4 लीटर ऑक्युपाई करिवो और 1 मोल ऑफ गैस रे केतना मॉलिक्यूल रहबो 6.023 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स रहबो एटा को कहा जाए एवोगाड्रोस नंबर तो 1 मोल ऑफ गैस रे एतिक मॉलिक्यूल रहबे और सेटा सब बोले 0 डिग्री सेल्सियस 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर ए कंडीशन को कहा जाए STP कंडीशन दैट इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर एटे 22.4 लीटर हो बॉयल्स लॉ कोन कोए बॉयल्स लॉ कोए कि टेम्परेचर जते बेले कांस्टेंट हबो टेम्परेचर जते बेले कांस्टेंट हबो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम और चार्ल्स लॉ कोए प्रेशर जते बेले कांस्टेंट हबो सॉरी बॉयल्स लॉ कोए टेम्परेचर जते बेले कांस्टेंट हबो प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होबो और चार्ल्स लॉ कोए प्रेशर जितले कांस्टेंट होबो टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होबो इट सब गैस पे अप्लाई तो ए सब रिलेशन को लेके हमें ଗୋଟେ डेरिवेशन करबा n प्रोपोर्शनल टू p p इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v t प्रोपोर्शनल टू v तो एथिरु ଗୋଟେ गैस इक्वेशन आछि सेडा को जे आइडियल गैस इक्वेशन pv इक्वल टू nRT P होची प्रेशर V होची वॉल्यूम N होची नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस T होची टेम्परेचर इन केल्विन प्रेशर को हमें नेबा एटमॉस्फेयर रे और वॉल्यूम को नेबा लीटर रे और N को नेबा मोल्स तो ये R रो वैल्यू आसीबो 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स एटा को जाय गैस कांस्टेंट यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट नेक्स्ट कांसेप्ट होची mass percent कोन it is obtained by using the following relation mass percent होची mass of the solute by mass of the solution into 100 सेमिति गोटे weight by volume percentage भी अछि mass of the solute by mass of the solution into 100 तो एटा क्वेश्चन देछि a solution is prepared by adding 2 gram of a substance to 18 gram of water so calculate the mass percent of solute so the mass of the solute केते हला 2 gram mass of the solution केते हला mass of the solute plus mass of the solvent that is mass of the water and water mass is 2.18 equal to 20 gram so mass percentage केते आसीबो 2 by 20 into 100 that is 10% mass by mass बा এটা আমি লেখা যায় 10% weight by weight লেখা weight by volume percent गोटे अछि सेटा को हम करा हबो weight by volume percent एटा होची weight by volume percent होची mass of solute divided by
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 एटा ग्राम रे एटा पर 100 ml हम माने 100 ml सॉल्यूशन रे केते ग्राम सॉल्यूट अछि सेटा होछि तो सपोज हमें 40 ग्राम सुगर अछि 40 ग्राम सुगर सपोज अछि 500 ml सुगर सॉल्यूशन में तो सेतर वेट बाय वॉल्यूम केते हो सुगर रो 40 mass of the solute divided by volume of solution is 500 into 100 equal to 8% weight by volume. Next होची मोल फ्रैक्शन. मोल फ्रैक्शन कोन मोल फ्रैक्शन डिफाइन हो गोटे मिक्सचर पई सपोज ए गोटे सब्सटेंस बी गोटे सब्सटेंस से दिजन को मिसेरी गोटे मिक्सचर प्रोड्यूस कराला से दिजन को मिसे गोटे मिक्सचर प्रोड्यूस कराला सेथिरे ए रो मोल्स अछि एन ए और बी रो मोल्स अछि एन बी तो सेथिरे टोटल नंबर ऑफ मोल्स कहते एन ए प्लस एन बी ए रो मोल फ्रैक्शन होची एन ए बाय टोटल नंबर ऑफ मोल दैट इज एन ए प्लस एन बी और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी होची बी रो मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल दैट इज एन ए प्लस एन बी एटी सेडाई लिखाई छी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू एन ए बाय एन ए प्लस एन बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी होची एन बी बाय एन ए प्लस एन बी एटा केतळ हबो रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टू पर्टिकुलर कंपोनेंट बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स गोटे पर्टिकुलर कंपोनेंट रो मोल रेशियो कराला टोटल नंबर ऑफ मोल्स रो it's a substance A dissolves in substance B then the number of moles are N and NB then the mole fractions are given by ZT. So second of all molarity. Molarity कोन molarity which is the most unit and denoted by M. Molarity is a very important unit. It is defined as the number of moles present in the solution of 1 liter. The number of moles divided by volume of solution in 1 liter. तो एरा कोए कि 1 liter solution रे केते number of moles अछि एथिरे सपोज 5 moles अछि 10 liter solution तो केते मोलारिटी हबो गोटे लिटर रे केते आसीबो 5 by 10 मोल तो 0.5 मोलार हबो एथिरे क्वेश्चन देछि कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ NaOH in the solution prepared by dissolving 4 gram in enough water to form 250 ml of solution केते मोलारिटी हबो तो से कहछि कि calculate the molarity 4 gram of NaOH is dissolved in enough water to form 250 ml of solution. So volume of solution होची 250 ml that is 1 by 4 liter. Moles of NaOH केते अछि 4 gram divided by NaOH रो molar mass केते 23 plus oxygen plus 16 plus 1 that is 40 so 4 by 40 0.1 so molarity केते हबो 0.1 divided by 1 by 4 that is 1 by 10 into 4 that is 0.4 molar ହେଲା नेक्स्ट होची मोलालिटी मोलालिटी कोन molality is defined as number of moles of solute present in 1 kg of solvent it is denoted by molal molality is equal to number of moles of solute divided by mass of solvent in kg तो एथरे से कहे कि 1 kg solvent रे केते moles of solute हम ऐड करले सेटा होची से सॉल्यूशन रो मोलालिटी फॉर एग्जांपल यदि में 50 moles solute ऐड करले 10 liter वाटर डेंसिटी हमको जाना 1 kg per liter तो 10 liter वाटर केते हबो 10 kg हबो मोलालिटी केते हबो नंबर ऑफ मोल्स केते ऐड करले 50 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg सॉल्वेंट रो मास केते हला 10 kg तो एटा हबो 5 मोलाल सॉल्यूशन रो मोलालिटी हबो 5 नेक्स्ट प्रॉब्लम होची डेंसिटी ऑफ 3 molar solution of NaCl is 1.25 gram per ml. So calculate the molality of the solution.
तो हम केमिति करिवा मोलारिटी केते देछि 3 मोल पर लीटर mass of NaCl in 1 liter solution केते हबो 3 into 58.5 that is 3 is 5 175.5 ग्राम हबो 1 liter रे कहीं ना से कहछि मोलारिटी होछि 3 मोल पर लीटर तो NaCl 1 liter रे 3 moles अछि तो केते मास अछि 3 moles into molar mass mass of 1 liter solution केते हबो density into volume 1000 ml 1250 ग्राम है mass of solvent केते हबो solution minus solute एति ग्राम हो mass of solvent तो एबे हमें कैलकुलेट करिया मोलालिटी नंबर ऑफ मोल्स केते अछि 3 मोल डिवाइडेड बाय मोलालिटी केते कहला नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी सॉल्वेंट रो मास केते हला 1074.5 तो एटा को जते हम कैलकुलेट करिया एटा ग्राम रे अछि तो एटा हम ने पड़े केजी रे से करिया पई कहछि मोलारिटी से बोले नेवा मास ऑफ सॉल्वेंट केजी तो 1.0745 केजी तो मोलालिटी हबो 3 divided by 1.0745 that is approximately 2.79 मोलार है ना अब हम स्टार्ट करिवा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट करिवा अब तो फर्स्ट क्वेश्चन से कहछि द नंबर ऑफ एटम्स इन 8 ग्राम ऑफ सोडियम इज x into 10 to the power 23 the value of x केते हबो round off to the nearest integer given Avogadro's number 6.02 into 10 to the power 23 atomic mass of sodium होछि 23 U बा atomic mass unit which number of atoms in 8 gram of sodium is एति फर्स्ट हम करिवा mass of sodium 8 gram number of moles of sodium केते हबो 8 divided by molar mass of sodium that is 8 by 23 so which number of atoms केते हबो एति की मोल से केति एटम हबो atoms of sodium हबो number of moles into Avogadro's number that is 8 by 23 into 6.02 into 10 to the power 23 एति की से दे देछि x into 10 to the power 23 बोली तो एटा को एपो 10 to the power 23 कटला एपो 10 to the power 23 कटला तो x केते आसला 8 into 6.02 divided by 23 तो एटा हमें कैलकुलेट करिवा 6.02 का अप्रोक्सीमेटली हम 6 नहीं परिवा तो 8 into 6 केते आसीबो 48 divided by 23 एटा केते आसीबो 2.07 एमिति के आसीबो तो एटा अप्रोक्सीमेटली से कहछि नियरेस्ट इंटीजर को राउंड ऑफ करिया पे तो 2.07 को हम लिखवा 2 तो आंसर हबो 2 so value of x is equal to 2 एटा जेई मेंस रो गोटे प्रीवियस क्वेश्चन जेई मेंस 2021 रे आस्थिला देखो केते सिंपल क्वेश्चन सिंपल फार्मूला यूज करी सॉल्व हो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करिवा NaNO3
weighed out to make 50 ml of aqueous solution containing 70 milligram of sodium plus per ml is kete gram. Round off to the nearest integer. Atomic weight of sodium in gram per mole होची 23 माने एटा molar mass of sodium 23 molar mass of nitrogen 14 और molar mass of oxygen 16 से दे देची से कौन पचारची केते ग्राम सोडियम नाइट्रेट हमको दरकार तमे 50 ml of solution बनेवा जोथिरे per ml 70 milligram of sodium plus रहे तो एटा हमें यूनिटरी मेथड यूज करी सॉल्व करवा 1 ml सॉल्यूशन रे 70 मिलीग्राम Na प्लस रहेगा तो 50 ml सॉल्यूशन रे 50 इंटू 70 मिलीग्राम Na प्लस रहेगा एटा कितने ग्राम होगा 50 इंटू 70 बाय 1000 ग्राम Na प्लस कैलकुलेट जति करवा 3.5 ग्राम Na प्लस रहेगा 50 ml सॉल्यूशन रे तो 50 ml सॉल्यूशन रे 3.5 बाय 23 होची सोडियम प्लस रे मोलार मास केते 23 तो 50 ml solution रे 3.5 divided by 23 moles of Na plus रहेगा एबे मते गोटे कथा को 1 मोल NaNO3 रे केते मोल Na plus रहेगा 1 मोल Na plus रहेगा नानी जदि 50 ml solution रे एतिकी मोल Na plus रहउची तो 50 ml solution रे एतिकी मोल NaNO3 भी रहेगा काहे ना 1 ml NaNO 1 मोल NaNO3 करिया पई 1 मोल ऑफ Na plus दरकार 70 मोल ऑफ Na plus 70 मोल ऑफ NaNO3 का तैयारी करियो so 50 ml solution रे 3.5 by 23 moles of NaNO3 दरकार बट से हमु कौन पचारची एठी NaNO3 रो weight पचारची in ग्राम केते ग्राम हमको NaNO3 दरकार ए सॉल्यूशन तैयारी करिया पई राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट ग्राम करिया पई कौन कराबो weight is equal to number of moles into molecular mass NaNO3 रो molecular mass केते हबो 23 plus 14 plus 3 into 16 that is 37 plus 48 that is 85 ग्राम तो 50 ml solution रे 3.5 by 23 into 85 ग्राम NaNO3 दरकार यदि हमें सॉल्व करिया 23 1 जा 23 3 जा कहते हैं 69 तो 16 160 तो approximately 3.7 तो आंसर होची 3.5 into 3.7 जोड़ा कहते हैं 12.95 सेटा उसे कोई चाहिए राउंडेड अप टू द नियरेस्ट इंटीजर तो 13 ग्राम ऑफ NaNO3 दरकार तो आंसर होगा 13 ग्राम नेक्स्ट क्वेश्चन 4.5 gram of compound A with molecular weight 90 was used to make 250 ml of its aqueous solution. Molarity of the solution is M is x into 10 to the power minus 1. Value of x is rounded up to the nearest integer. Mass कितने दीजिए 4.5 ग्राम
मोलार मास 90 तो मोल्स केते हबो 4.5 by 90 से कहछि 250 ml aqueous solution अछि aqueous माने वाटर सॉल्वेंट अछि 250 ml माने 1/4 liter से कहछि मोलारिटी होछि x into 10 to the power minus 1 तो एटा मोलारिटी केमिति काढिया मोलारिटी होछि number of moles divided by volume number of moles होछि 4.5 divided by 90 divided by volume होछि 1/4 liter the volume liter रे रहबो 45 by 10 to 90 to 4 1/5 molar से कहछि कि मोलारिटी होछि x into 10 to the power minus 1 सेटा आसला 1/5 तो x केते आसियो 1/5 into 10 to the power minus 1 that is 10/5 equal to 2 तो x रो वैल्यू होछि 2 next question the mole fraction of a solute in a 100 molar aqueous solution is it kept into 10 to the power minus 2 round off to the nearest integer mole fraction कोन थिला mole fraction of a solute कहछि in a 100 molar solution 100 molar solution माने एतरे अछि 100 mole solute in 1 kg water 1 kg water रे केते moles water अछि केंति काढिया 1000 gram butter divided by water molar mass के 18 gram तो एटा आसीओ 55.5 moles so से कहछि mole fraction of solute कोन हबो mole fraction of solute equal to moles of solute divided by total number of moles so moles of solute होछि 100 moles हम आगु जानछे total moles केते moles of solute plus water रो 55.5 तो एटा तने करबा 100 by 155.5 आछि is equal to x into 10 to the power minus 2 तो सेम x खोजा पे x is equal to केते आसियो 100 by 155.5 into 10 to the power minus 2 that equal to 155.5 इतना में 5 रे करियो 23.1 equal to 20,000 by 311 एटा जेतला में approximately करियो एटा आसीयो 63.9 तो एटा होची 64 उसे कोई राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर तो आंसर होची 64 नेक्स्ट क्वेश्चन होची मोल फ्रैक्शन of a solute in a 100 molar aqueous solution is kette into 10 to the power minus 2 round off to the nearest integer mole fraction of a solute in a 100 molar aqueous solution same question कर दे जरा मु आउट क्वेश्चन काढुची क्वेश्चन होची एटा क्वेश्चन है याची 100 ml of Na3PO4 solution has 3.45 gram of sodium molarity of solution is dash into 10 to the power minus 2 mole per liter round off to nearest integer जे कहछि कि कोन कहछि 100 ml of sodium phosphate solution रे 3.45 gram of sodium अछि से molarity of solution केते हो
केते मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन हम काढिया 100 ml रे एतिकी ग्राम सोडियम अछि माने 100 ml फर्स्ट हम कर देबा एडे 1 मोल सो Na3PO4 रे 3 मोल्स सोडियम रहबो ना 1 मोल Na3PO4 रे 3 मोल सोडियम रहबो हला तो x मोल सोडियम केते हबो x by 3 moles है तो यदि 1 मोल Na3PO4 रे 3 मोल सोडियम रोची तो x मोल सोडियम पाई x by 3 moles of सोडियम Na3PO4 दरकार ना है एटे को यूज करिया मैं क्वेश्चन स्टार्ट करिया ठीक है 100 ml रो 3.45 ग्राम सोडियम अछि 3.45 ग्राम माने कितने मोल डिवाइडेड बाय 23 करिया ना बिकॉज़ आर मोलर मास 3 मोल्स आसीबो एबे तो कैलकुलेशन फास्ट में सिखि जायतबणी इज इक्वल टू 345 by 2300 2300 जा 23 1 जा 23 5 जा तो 15 by 100 moles सोडियम अच्छी 100 ml एबे हम देखले कि x moles of sodium पाई x by 3 moles of Na3PO4 दरकार तो जदि 100 ml of Na3PO4 solution रे 15 by 100 मोल सोडियम अच्छी तो केते मोल सोडियम फॉस्फेट रहेगा तो 100 ml solution रे 15 by 100 into 3 moles of sodium phosphate रहेगा तो एटा हबो 0.05 moles of Na3PO4 but से क्वेश्चन कौन कहछि dash into 10 to the power minus 2 0.05 is equal to x into 10 to the power minus 2 that means x is equal to 5 आंसर होछि 5 आंसर कौन 5 नेक्स्ट क्वेश्चन करवा 0.56 gram sample of limestone is dissolved and all the calcium is precipitated as CaC2O4. This required 40 ml of 0.25 normal KMnO4 solution in acidic medium. Find the percentage of calcium oxide in the limestone. तो हम क्या करियो फर्स्ट हम जीवा मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4 कितने 40 ml into 0.25 normal तो मिली इक्विवेलेंट्स कितने आसीबो बिकॉज़ एटा ml रे दिया अछि तो एटा मिली इक्विवेलेंट आसीबो जदी लीटर देथाना तो इक्विवेलेंट्स आस्थाना हला एटा नॉर्मल देछि सतमे इक्विवेलेंट्स आसी जदी मोलर देथाना तो मोल्स आस्थाना ml देछि तो मिली आसीना नॉर्मल देछि तो इक्विवेलेंट आसीना लीटर देथिले नॉर्मल इक्विवेलेंट्स आस्थाना एटा m देथिले बा मोलर देथिले मोल्स आस्थाना तो मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4 कितने यूज है 40 into 0.25 that is 10 मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड कितने हबो 10 हबो काई जदी KMnO4 गोटे मिली इक्विवेलेंट 10 मिली इक्विवेलेंट कंज्यूम होला तो कैल्शियम ऑक्साइड भी 10 मिली इक्विवेलेंट ही कंज्यूम होगा तो ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इज इक्वल टू 10 into 10 to the power minus 3 एटा मिली इक्विवेलेंट्स करथिले एटा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स करले तो मिली माने into 1000 थिला तो 1 by 100 equivalents of calcium oxide तो mass of calcium oxide कितने होगा 1 by 100 into equivalent mass कितने 56 by calcium oxide रो n factor होची एटा होची तार molar mass 56 n factor होची 2 equal to 0.28 gram percentage of calcium oxide से लाइमस्टोन रे केते थिला 0.28 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड थिला टोटल मास थिला 0.56 जेतले मल्टीप्लाई करिवा सेडा आसीबो 50% तो सेडा थिला 50% प्योर सैंपल
एटा प्यूरिटी ऊपर गोटे क्वेश्चन थिला एटा भी प्रीवियस ईयर रे आसीची नेक्स्ट क्वेश्चन करिया 8.7 ग्राम of pure MnO2 8.7 gram of pure MnO2 is heated with excess of HCl and the gas evolved is passed into KI solution. Amount of I2 gas liberated will be. एटा में फर्स्ट हम इक्वेशन जानिया पड़ियो कोन MnO2 जेतने HCl सहित रिएक्ट करियो से प्रोड्यूस करियो MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2O एठी हमें बैलेंस करिया दरकार नै काहे कि बैलेंस करिया दरकार नै बैलेंस करिया पे सेतोल दरकार पड़ियो जेतोला हम मोल्स सहित डील करियो जदि हम इक्विवेलेंट सहित डील करियो हमें जानि छै नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स कंज्यूम is same as the number of equivalents of each individual product formed एटा जते इंडिविजुअल इक्विवेलेंट प्लस सते इक्विवेलेंट कंज्यूम हो ए सब सते सते इक्विवेलेंट प्रोड्यूस हो तो बैलेंस करियार किछि दरकार है सेकंड इक्वेशन होची Cl2 plus potassium iodide is I2 plus HCl मैं कौन कहछि 8.7 ग्राम ऑफ प्योर MnO2 को हम हीट करले HCl सहित सेथिरु जो क्लोरीन गैस बाहरला से क्लोरीन गैस को हमें पोटेशियम हाइड्रेट सहित मिक्स करले पोटेशियम हाइड्रेट सहित मिक्स करलो कि आयोडीन गैस बाहरला तो से अमाउंट ऑफ आयोडीन गैस केते बाहरला सेडा से पचास मोल्स ऑफ MnO2 केते कंज्यूम होला 8.7 divided by r मोलर मास केते 55 plus 32 it is 87 0.1 mole MnO2 consume होची so the moles of MnO2 0.1 consume होची तो moles of Cl2 भी 0.1 ही प्रोड्यूस होगा होला तो moles of I2 भी सेती ही प्रोड्यूस होगा so such mass I2 ର mass केते 127 into 2 that is 254 0.1 mole पे केते हबो 0.1 into 254 gram that is 25.4 gram of iodine gas produced right answer next question what volume of H2S gas measured at 1 atmosphere and 0 degrees Celsius is produced when 16.6 gram of potassium iodide reacts with excess of H2SO. H2SO for it excess रही तो एटा लिमिटिंग रिएजेंट किए पोटेशियम आयोडाइड होची लिमिटिंग रिएजेंट आ ऊपर डिपेंड करिवो केते रिएक्शन हो केते रिएक्शन हबन सो इक्वेशन एठी ऑलरेडी दे देची से होची व्हाट वॉल्यूम ऑफ H2 gas measured when 16.6 gram तो फर्स्ट टाइम कैलकुलेट करिवा moles of potassium iodide केते रिएक्ट करछि 16.6 divided by potassium iodide रो मास केते हबो 39 potassium plus iodine 127 तो एडा 166 0.1 moles यदि 0.1 moles potassium iodide रिएक्ट करछि तो केते n फैक्टर हबो 0.1 रो 0.1 इक्विवेलेंट से जो सिमिलरली से कहछि वॉल्यूम ऑफ H2S गैस केते प्रोड्यूस हबो 0.1 इक्विवेलेंट यदि potassium iodide consume होछि तो 0.1 equivalent of iodine produce होबो तो number of equivalents of iodine भी 0.1 equivalent से produce होबो से कोन पचाछि H2S पचाछि हो H2S भी 0.1 equivalent ही produce होबो तो equivalents of H2S found is 0.1 moles of H2S produced करते होबो 0.1 by 8 कहीं कि because n factor of H2S equal to 8 एडा मेमोराइज कर दियो कि H2S रन फैक्टर होची 8 एबे पई जेतो रिडक्स पड़िया सेतो जानिबा के मिलि होची the volume of H2S Avogadro's law रे मु तुमको कहथिली कि 0 डिग्री सेल्सियस और 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर रे 1 मोल ऑफ गैस सबोरे 22.4 लीटर ऑक्युपाई करे एठी केते मोल आसला 0.1 by 8 से कोन पचाछि वॉल्यूम पचाछि
तो एटा हम 0.1/8 इंटू देखो 1 एटमॉस्फेयर आओ 0 डिग्री सेल्सियस दिया है माने एटा कोन कंडीशन एसटीपी बा स्टैंडर्ड टेंपरेचर प्रेशर कंडीशन 0.1/8 the number of moles multiplied by 22.4 liter that is 0.1/8 into 22400 ml एटा कैलकुलेट करले आसीबो 280 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा 28 gram of nitrogen and 6 gram of hydrogen were mixed at equilibrium 17 gram of NH3 was found the weight of N2 and H2 at equilibrium are respectively first reaction लिखिया nitrogen plus hydrogen gives rise to NH3 एटा 3 हबो एटा 2 हबो टाइम इक्वल टू 0 रे केतला 28 ग्राम नाइट्रोजन और 6 ग्राम हाइड्रोजन थिला 28 ग्राम नाइट्रोजन माने 1 मोल थिला 6 ग्राम माने 3 मोल थिला एटा 0 मोल थिला T इक्वल टू जतले इक्विलिब्रियम टेंपरेचर जा इक्विलिब्रियम टाइम आसीबो सेतले कोन हबो इक्विलिब्रियम टाइम रे सपोज एटा 1 माइनस x कंज्यूम होला तो एटा 3 माइनस 3x कंज्यूम होबो एटा 2x प्रोड्यूस हो बट से कहै छै इक्विलिब्रियम में 17 ग्राम NH3 अछि माने 2x इक्वल टू 17 ग्राम NH3 तो 2x इक्वल टू केते मोल 1 मोल तो x इक्वल टू 1/2 मोल तो 1 माइनस x करते हो 1 माइनस 1/2 इक्वल टू 1/2 मोल 1/2 मोल ऑफ नाइट्रोजन कितने ग्राम होगा 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन होगा 3 माइनस 3x 3 माइनस 3/2 इक्वल टू 3/2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इंटू 2 कर ले 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन होगा तो टोटल 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एंड 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रहेगा एट इक्विलिब्रियम 14 ग्राम एंड 3 ग्राम होची राइट आंसर हला आ गोटे सिंपल क्वेश्चन गोटे प्रैक्टिस करबा क्वेश्चन कोची एटा एनसीईआरटी रो एग्जांपल गोटे एग्जांपल नंबर प्रॉब्लम 1.4 how many moles of methane are required to produce 22 gram carbon dioxide after combustion तो एठे हम इक्वेशन लिखिया मीथेन कोन CH4 plus oxygen gives rise to carbon dioxide plus water तो बैलेंस हो गला एथिरे बैलेंस्ड इक्वेशन लिखि देल ना हमें एबे से कहै छी 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर कंबशन प्रोड्यूस हो 22 ग्राम माने केते मोल्स 1/2 मोल्स कारण कार्बन डाइऑक्साइड रो मोलार मास होची 44 तडा 1/2 मोल्स प्रोड्यूस होला से कहै छी केते मोल्स ऑफ मीथेन दरकार जदि एटा 1/2 मोल्स सेटा भी 1/2 मोल्स मीथेन दरकार तो देयरफॉर 1/2 मोल मीथेन is needed एटा हम केमिल जानले by the principle of atomic conservation POSC रूल को जाएगा प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन सो आज रिवीजन क्लास सरला चैप्टर हमें समराइज कर देले चैप्टर रिवाइज कर देले क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर देले सो हमारा फर्स्ट चैप्टर ऑफ 11th क्लास और केमिस्ट्री सरला सो थैंक यू